this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the concept of governance. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। वेल, governance has been defined to refers to structures and processes that are designed to ensure accountability, transparency, responsiveness, rule of law, stability, equity and inclusiveness, empowerment, and broad-based participation. Well, governance also represents the norms, values, and rules of the game through which public affairs are managed in a manner that is transparent, participatory, inclusive, and responsive. In a broad sense, governance is about the culture and institutional environment in which citizens and stakeholders interact among themselves and participate in public affairs. Further, governance can be defined as power relationship, formal and informal processes of formulating policies and allocating resources, process of decision making, and mechanism for holding government accountable. So, when we talk about governance, governance is always defined to refers to a particular structure and all those processes that enables or that are designed to ensure accountability, and accountability is one of the most very important essence of governance, and without accountability, the transparency, responsiveness, rule of law, stability, equity and inclusiveness and empowerment, you cannot have governance. Because governance include certain norms and values which are very important part of that game through which all the public affairs are managed in a manner that there is a transparency, participatory, inclusive and responsive. So we have to remember that governance is actually a broad sense which involves about culture, institutional environment, and as well as all those citizens and stakeholders which are very important part of this discourse. It also talks about power relationship, it talks about formal and informal process. It also talks about how resources have been allocated and how the process of decision making have been taken place. So in short, in a big way, governance include these factors, as I've been speaking about, that accountability in any sort of a governance is important. You have to be accountable for your action. There has to be a transparency, because if you want to make sure that you reach out to your people and you deliver a good governance, then people should know what the system is doing. There has to be a transparency between the system and the people. Obviously, responsiveness is another very important factor of governance. What does it mean? It means you have to be very responsive towards the demand, towards the questions which people are raising. Yes, there has to be a rule of the law, because without the rule of the law, there cannot be a governance. You have to uphold the rule of the law, and law should not be banned or law should not be violated for any selfish purpose. Yes,
there has to be a stability in your thought, stability in your processes, and stability in the policy making. Because if you are stable, then obviously you would be in a position to deliver the promises and a good governance to the people. Equity and inclusiveness is another most important assets of governance. Your policies, your decision making, your response has to be equity and inclusiveness. You must include everybody within the system, irrespective of which caste, color, creed, gender, or ethnicity they may belong to. It has to be inclusive of every stakeholder within the governance. Empowerment is another very important aspect of governance. Your governance must empower people. Governance should boost people confidence so that they can contribute back to a society. And obviously it talks about a broad participation. Without broad participation of stakeholders, state will not be in a position to deliver that governance. So we need our stakeholders to be part of this system. And in short, this is all about the concept of गवर्नेंस. गवर्नेंस जो कॉन्सेप्ट है ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बयां करता है, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस को डिज़ाइन करता है, और ये सारे जो प्रोसेस या फिर स्ट्रक्चर है ये इन बड़े बड़े पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा. गवर्नेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. आपको अकाउंटेबल होना चाहिए आपकी पॉलिसीज़ की तरफ, आपके एक्शन की तरफ. क्योंकि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो लोग हमेशा अपने गवर्नमेंट के पास देखते हैं. अगर कुछ गलत होता है तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि सरकारी ऐसी एक सिस्टम है और एक व्यवस्था है जो गवर्नेंस को अप्लाई करती है या फिर गवर्नेंस को डिलीवर करती है. और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस का. सिमिलरली जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो जो बिजनेस होता है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स द सोसाइटी वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है. अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट लेती है लोगों के लिए तो वो प्रोजेक्ट क्या है, उसके प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, कब कंप्लीट होगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है. ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो सिटीजन है वो एक टैक्स पेयर्स है और उसके पैसों से ही ये प्रोजेक्ट हो रहा है, तो लोगों को पता होना चाहिए. तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद इन द बिगर कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस. सिमिलरली रिस्पॉन्सिवनेस, आप हमेशा एक रिस्पॉन्सिव होने चाहिए. जब सरकार बनती है, कोई सरकार है, तो उसका जो दायित्व है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमेशा एक रिस्पॉन्सिव अथॉरिटी की तरह काम करनी चाहिए. कि जब भी कोई इश्यूज आता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्स टू दैट. क्योंकि अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू रीच आउट टू योर पीपल. नेक्स्ट बनता है हमारा रूल ऑफ लॉ. कानून बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून सबसे ऊपर है. और जो भी चीज़ होती है सोसाइटी में या फिर स्टेट में, वो हमेशा कानून के हिसाब से होनी चाहिए. अगर आप कानून फॉलो करोगे देन डेफिनेटली एक अच्छा गवर्नेंस हो सकता है. अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली गवर्नेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. इसीलिए रूल ऑफ लॉ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है गवर्नेंस में. सिमिलरली स्टेबिलिटी, आपकी सोसाइटी में कैसी स्टेबिलिटी है ये बहुत मायने करती है. क्या आप अपने डिफरेंस को साइड में रखकर एक सोसाइटी के लिए काम करना चाहोगे, एक साथ मिलकर जो इश्यूज़ है उसको हैंडल करना चाहोगे. ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि आप
किस वैल्यूज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर आप किस वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसीलिए स्टेबिलिटी होना सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू डिलीवर दैट गवर्नेंस टू द पीपल। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। हमारी जो सोसाइटी है, खासकर हमारे इंडिया में, हम बहुत डाइवर्स है। वी हैव लॉट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, एथनिसिटी, लैंग्वेज और रिलीजन। और इसके कारण बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि हम सब लोगों को एक साथ कैसे लाए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी पॉलिसीज़ होगी, वो सबके लिए होनी चाहिए। तो सबको एक बराबर लाना, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट प्रमोटिंग वन कम्युनिटी और वन ग्रुप ऑफ पीपल। और इसीलिए ये जो सारे लोग हैं, ये एक स्टेक होल्डर है इस गवर्नमेंट में, और गवर्नेंस में इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सेदारी है। और इसीलिए इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है गवर्नेंस का। सिमिलरली वी हैव एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे सोसाइटी में, स्पेशली एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। हमें नारी शक्ति को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। नारी शक्ति हमारे देश का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट असेट्स है। इफ़ वी एम्पावर दैम with all kind of policies और all kind of scheme, तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली लास्ट आता है पार्टिसिपेशन। हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे गवर्नमेंट में, हमारे गवर्नेंस में अगर गवर्नेंस को अच्छा बनाना है तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सरकार जो बनती है ये लोगों के वजह से ही बनती है। और अगर लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही पार्टिसिपेट करेंगे और रेस्ट ऑफ द टाइम अगर वो सिर्फ घर में बैठेंगे और अपना ओपिनियन रेज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल हैव अ प्रॉब्लम। और इसीलिए पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ अगेन वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। सो ये सारे जो चीज़ें हैं ये गवर्नेंस को बयां करते हैं, ये गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। आई होप you have understood this tutorial, and I will see you soon in the next tutorial. So I hope you have understood this concept of governance. Do let me know your views in the comment box below, and I will see you soon in the next tutorial. Till then, take care.